सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट फाइन में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोग आपके जो ये है हेरिडिटी का पार्ट है वो कवर कर चुके हैं, है ना। बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, एंड व्हाट आर इनहेरिटेड जीन्स, व्हाट आर एक्वायर्ड जीन्स, देख चुके हैं। आज बेसिकली हम लोग जो पार्ट करने वाले चैप्टर को सेकंड पार्ट है, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये टेलीग्राम हैंडल है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टार्टिंग विद द टुडेज क्लास, दैट इज द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। Based on this principle, we can work out the evolutionary relationship of the species we see around us. ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कहने में दीज प्रिंसिपल मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकते हैं किसी भी स्पीशीज के बीच में। और ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी होती है, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज योर फाइलोजेनिक फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक। ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड इन टाइम। और ये क्या है, इवोल्यूशन क्या है, पीछे की स्टडीज करना, मतलब जो आपके पूर्वज रह चुके हैं उनकी स्टडी करना एंड ऑल दैट। ठीक है, we can do this by identifying hierarchies of the characteristic between species. In order to understand this process, let us think back to our discussion on the classification of organism in class 9। ठीक है, जो आपकी वो थी किंगडम वाली क्लास, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा ना, वो बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन, उस पे कह रहे हैं वापस जाने को। Similarities among organisms will allow us to group them and then study the group. Okay. For this, which characteristic decide more fundamental differences among organisms and which one decide less basic differences? What is the meant by characteristic? Characteristics क्या होते हैं? Features. Anyway, characteristics are detailed of appearance or behavior. In other words, a particular form or a particular function. That's why we have four limbs is thus a characteristic. हमारे पास चार limbs होते हैं, two forelimb, two hind limb. That is a characteristic. That plant can do photosynthesis is also a characteristic. एक plant जो कि photosynthesis कर सकता है वो भी एक characteristic है. Some basic characteristic will be shared by organism, most of the organism. The cell is the basic unit of life. आप लोगों को पता है, क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग. The characteristic in the next level of classification would be shared by most but not all the organism. ठीक है, जो आगे जाएगा ये character ये most of the organism में होगा, but सब में नहीं हो सकता, ऐसा कोई compulsory भी नहीं है. A basic character of a cell design that differs among different organisms is whether the cell have a nucleus or not, prokaryotic or eukaryotic. Bacterial cell do not, while the cell of most of the other organisms do. अब ये कह रहे हैं bacterial cell do not have nucleus नहीं कहा उन्होंने, they do not have well defined nucleus. तो nucleus होता है, but एक well defined nucleus नहीं पाया जाता बैक्टीरिया के अंदर। हार्बर दूसरे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम हो गए, हमारे अंदर पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, that property marks a very basic difference in the body design because of specialization of cell tissue type. Among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental different design. We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developed that allows us to make classification. So hierarchy क्या होता है? Series of steps. Hierarchy is the series of steps जिसकी मदद से आप लोग किसी भी चीज को एक ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, the more characteristic the two species will have the common. The more characteristic two species will have in common, the more closely they are related. जितने कैरेक्टर्स कॉमन होंगे इसका मतलब है दे आर दैट मच क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब वो इतने ही क्लोजली रिलेटेड है। जस्ट गिव मी अ मिनट। An example will help, and the more closely they related, the more recently they have been had a common ancestor. A brother and sister are closely related. Example दे रहे हैं, जो brother और sister होते हैं, they are closely related to each other. They have a common ancestor in the first generation before them, and उनसे पहले common ancestor होते हैं, they have both common parents.
Them namely their parents. A girl and her first cousin are also related, but less than the girl and her brother. अब जो नेक्स्ट कजन होगा आप लोग दे कैन ऑल्सो भी रिलेटेड टू आपको उसके पास भी चार ही हाथ चार लिम्स होएंगे आपके पास भी चार लिम्स है बट उनका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप कॉमन नहीं है ना दिस इज बिकॉज कजन हैव कॉमन एंसेस्टर देयर ग्रैंड पेरेंट्स है ना जो पेरेंट्स है वो कॉमन नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन हो सकते हैं इन द सेकेंड जनरेशन बिफोर देम नॉट इन द फर्स्ट वन we can now appreciate that classification of a species is the fact of a reflection of their evolutionary relationship तो जो बॉडी डिजाइन बन रहा है वो तो सबका सिमिलर है व्हाट इज दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो कि एवोल्यूशन के टाइम पे डेवलप हो चुका है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस टाइम पे वी कैन now we can thus build a small group of species with recent common ancestors, then supergroup of these species with more distinct common ancestors, and so on. In theory, we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of the evolutionary time. मतलब जब अर्थ बनी थी तब एक सिंगल स्पीशीज आई थी जब तक हम वहां पे नहीं पहुंचाते ऐसे हमारी थ्योरी चलती रहेगी If that is the case, then at some point of the history of the earth, non-living material will have given rise to life. और आपको कल बताया था मैंने लास्ट थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन कि जो आपकी लाइफ आई थी वो इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई थी देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट हाउ देयर माइट हैपन वो बता दिया मैंने आपको थ्योरी एक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कम अप विद थ्योरीज ऑफ योर ओन और आप भी अपनी थ्योरी बना सकते हैं ना अगर दूसरों को सही लगी तो उसको भी थ्योरी मान लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग थ्योरी नहीं दे सकते यू कैन ऑल्सो गिव सम ऑफ द थ्योरीज ठीक है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है इसे आप लोग कैसे ट्रेस कर सकते हो ऐसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हो तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं लेट अस स्टडी दैट एविडेंसेस व्हेन वी ट्राई टू फॉलो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक एज कॉमन these characteristics in different organisms would be similar because they are inherited from a common ancestor the characteristic होगा similar होगा an example consider the fact that mammals have four limbs as do birds reptiles and amphibians जैसे इन लोगों के पास भी limbs होते हैं वैसे mammal के पास भी है four limbs the basic structure of the limbs is similar throughout the to it have been modified to perform different functions स्ट्रक्चर सब में सेम है सिर्फ क्या होगा फंक्शन डिफरेंट हो गया जैसे बर्ड्स में जो उसके फोर लिम्स होते हैं ये वाले हैंड हो गए ये उड़ने के काम आते हैं ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं बट स्ट्रक्चर सेम है ना सच अ होमोलोगस कैरेक्टर और ऐसे कैरेक्टर जिनमें स्ट्रक्चर सेम रहता है बट फंक्शन डिफरेंट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस कैरेक्टर हेल्प टू आइडेंटिफाई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपरेंटली डिफरेंट स्पीशीज अब ये क्या होता है होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं ये डिपेंड्स ऑन द डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन डाइवर्जेंट मतलब बिखरना एक से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन गई है ना एक कॉमन चीज थी उससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन गई कि तू लेके यही जाएगा बट तुझसे काम दूसरा करेगा जैसे अगर जो घोड़े की बात करें वो भागने में हेल्प करते हैं कुत्ते की बात करें वो भागने में हेल्प करता है कूदने से हम लोग एक्सरसाइज खाने में हेल्प करते हैं देन वही अगर जो मैंने बर्ड्स एग्जाम्पल दिया उड़ने में हेल्प करते हैं बट अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसे है कॉमन है ठीक है दैट इज टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एक से डिफरेंट डिफरेंट जगह में बिखर गए ठीक है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए however all the similarities simply in the organ shape are not necessarily because of common ancestor what would we think about the wings of birds and bat अब आपको birds और bat के wings में क्या दिखने को मिल रहा है are they similar no they are not similar ठीक है दोनों का फंक्शन सेम है जो बर्ड और बैट के जो विंग्स होते हैं दोनों का फंक्शन सेम है उड़ने का बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है birds and bat have wings but squirrel and lizard do not so are birds and bat more closely related to each other than the squirrel and lizard ठीक है तो कह रहे हैं कि birds और bats के wings होते हैं उड़ने के लिए जबकि जो आपके squirrel और lizard है इनके पास नहीं होती इसका मतलब ये birds और bats they are closely related to each other before we jump to the conclusion, let us look at the wings of the birds and bat more closely. When we do that, we find that the wings of bats are skin-fold stretches mainly between elongated fingers, but the wings of birds are feathery covering all over the arm. The design of the two wings, their structure and the component are thus very different. They look similar because they have a common use of line.
but their organs are not common. This makes them an analogous character. Such a type of character in which there is the same function but different structure, that is known as your homologous type of character, and they belong to a convergent evolution. मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए और उन्होंने एक जैसा फंक्शन ले लिया, तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है इनका, बट दे यूज टू डू सेम फंक्शन, दैट इज व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज दो आपने वो देख लिया अभी तक एविडेंसेस, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस क्या था, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, और एनालॉगस सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग इज योर फॉसिल्स। Such studies of organ structure can be done not only on current species but also on the species that are no longer alive. अब ऐसी स्पीशीज भी आप स्टडी कर सकते हो जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर एग्जिस्टेड, कभी ये रहती भी थी, कभी ये जिंदा भी थी। वी नो दिस फ्रॉम द फाइंडिंग फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द डेड एंड डीके रिमेन्स, जो उनके मरने के बाद जो इनकी ढांचा रहता था, स्केलेटन रह जाता है, या फिर कोई भी पार्ट रहे उसमें से इन्हें पता लगा सकता है कि ये थे एक टाइम पे। Usually when organism dies, their bodies will decompose and be lost. But every once in a while, the body or at least some part may be in the environment. कोई मैंने कहा कि बॉडी सारी डिकम्पोज नहीं होती, कभी भी कुछ पार्ट रह ही जाते हैं हमेशा। That does not let it decompose completely. If a dead insect gets caught in a hot mud, for example, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden. क्या होगा, वो जो मड होगी वो हार्ड हो जाएगी, बट जो उसके अंदर इंसेक्ट मरा है वो हार्ड नहीं होगा। एंड रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो हार्ड हो रही है, मिट्टी हार्ड हो रही है, मड हार्ड हो रही है, तो क्या होगा कि इंप्रेशन सा बन जाएगा उस मिट्टी के अंदर कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज फंसी हुई थी। इंसेक्ट की बॉडी टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप करते ना, अगर जो आपने कोई मड है, मड क्या होता है, मिट्टी लो उसको, उसमें पानी मिला दो, ये क्ले सा स्ट्रक्चर बनता है। अगर जब उसमें अपना अंगूठा लगाओगे तो आपको दिखता होगा अंगूठे का इंप्रेशन लग जाते हैं। सिमिलरली ऐसे अगर जो इंसेक्ट उसके अंदर रह गए और मर गए तो इंसेक्ट के इंप्रेशन आ जाएंगे। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल। और ऐसे सारे जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर द डेड डीके रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल आर, हमें कैसे पता चलेगा जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू दिस एस्टिमेशन। इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए दो चीजें हमारे पास है। वन इज रिलेटिवली, इफ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल, अगर जो हम लोग खोदना शुरू करते हैं अर्थ को और फॉसिल ढूंढना शुरू करते हैं, तो जो फॉसिल आपको ऊपर मिल जाएगा दैट इज रिसेंट, वो रिसेंट होगा। वहीं जितना डीप आपको मिलता रहेगा वो उतना ओल्ड होता रहेगा। It is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface are most recent than the fossils we find deeper. The second way of dating fossils is by detecting the radius of a different isotope or of same element in the fossil material. It would be interesting to find out exactly how this method works. और second method क्या होता है, dating, मतलब कार्बन डेटिंग मेथड होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन का कंटेंट होता है और वो वेरी करता है। ठीक है, वो वेरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, और जो कार्बन होता है वो धीरे 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 डिकम्पोज होते रहता है। ठीक है, तो जब आपको फोसिल मिला आपने क्या करना है, उसका कार्बन कंटेंट चेक करना है। अब जितना कार्बन कंटेंट होता है, और डिकम्पोज कब करते हैं कार्बन, आफ्टर योर डेथ। जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे कार्बन डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली आप लोगों ने CID वगैरह देखी हो, वहाँ पे कैसे बताते हैं ना कि इस बंदे की मौत 24 घंटे पहले हुई है, इसकी हफ्ते पहले हुई है, इसकी महीने पहले हो चुकी है। तो बेसिकली कार्बन का ही मेथड यूज करते हैं, वो कार्बन कंटेंट निकाल देते हैं बॉडी में कितना है, और जितना कार्बन कंटेंट खत्म हो चुका होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो। बेसिकली हर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ टाइम होती है, तो उसके मदद से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो ये दिखा रखा है हाउ डू फॉसिल फॉर्म्स लेयर बाय लेयर। ठीक है, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको 100 of million ईयर अगो शुरू हुआ, तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म थे वो नीचे दब गए, देन डायनासोर्स आए, देन डायनासोर्स नीचे दब गए, एंड देन होर्सेस आए, होर्सेस मरा, होर्स आए नीचे दब गया, एंड ऑल दैट। तो ऐसे ऐसे जितना ऊपर होगा वो उतना नया होगा, और जितना नीचे उतना पुराना होता जाएगा। ओके, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब इवोल्यूशन को एज स्टेजेस पढ़ते हैं। A question that arises here is if complicated organisms such as the eye, complicated organ, okay, are selected for the advantage that they provide, how can they be generated by the single DNA change? कैसे single DNA change से
आइस बन सकती है। सोच सकते हो आप लोग कि एक टाइम पे जब आइस नहीं थी, थोड़ा सा डीएनए में चेंज हुआ, आइस आ गई अगले ऑर्गेनिज्म में। तो हाउ इट इज पॉसिबल? श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कैन बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम आइस आ गई, पहले एक आइस से स्ट्रक्चर बना होगा, देन वो नॉन फंक्शनल रहा होगा, देन थोड़ी सी ऐसी आई बनी होगी जो कि बहुत कम लाइट को सेंस करती होगी। यूग्लिना पढ़े ना आपने, यूग्लिना, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को सेंस कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, एकदम आइस पूरी फुली प्रिपेयर्ड नहीं बनती। There are the number of possible explanations. Even an intermediate stage such as the rudimentary ice can be useful to some extent. Rudimentary मतलब some extent जो थोड़ा सा काम कर सकती थी. This might be enough to give a fitness advantage. In fact, the ice, like the wings, seems to be very popular adaptation. Insects have them. And the ice, like the wing, आप लोग पढ़ रहे हो ऐसी ice जो कि wings की तरह दिख रही थी. So does an octopus and so do vertebrae. And the structure of eye is each of these organisms is different enough for them to have separate evolutionary organs. ठीक है. Also, a chain that is useful for one property to start with the one because useful later for quite a different function. Feathers, for example, can start out as providing insulation as in a cold weather. Feathers क्यों बनाए गए थे? ताकि पक्षियों को ठंड ना लग सके, बट लेटर दे माइट बिकम वेरी यूजफुल फॉर फ्लाइट। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक यूजफुल ऑर्गन बन गए उड़ने के लिए। इनफैक्ट सम डायनासोर्स हैव फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई। कुछ डायनासोर्स थे वो उनको फेदर भी थे फिर भी नहीं उड़ पाते थे, क्योंकि उनका बॉडी वेट ही बहुत ज्यादा था। Although they could not fly because using the feather, and a bird seems to have later adapted to feather to flight. This, of course, means that birds are very closely related to reptiles since dinosaurs were reptiles. है ना? तो बेसिकली एक आर्क्योपेटेरस बर्ड थी जो कि आप लोगों ने शायद स्टडी भी करनी है इसमें। आर्क्योपेटेरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्क्योपेटेरस एक डायनासोर था क्योंकि जिसको विंग्स आ गए सबसे पहले और वो भी सकता था। It is all very well to say that very dissimilar looking structure evolved from a common ancestor's design. It is true that analyze the organ structure in fossil allow us to make estimate of how far the evolutionary relationship goes. But those are guesses about what happened in the history. है ना, ये guess होता है, ये कोई 100% true नहीं हो सकता. Are there any current example of any such process? The wild cabbage plant is a good example. X time पे जो current है that is a well good example. कि evolution के example है कैसे evolution हुआ है, ठीक है. Human have over more than thousands of years cultivated wild cabbage as a food product, है ना, food plant and generated different vegetation from it. Different type of vegetables उससे बनाई by selection. और कौन सी selection? Artificial selection होती है, hybridization से. दिस इज ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन अपने नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं कुछ, rather than natural selection. So some farmers have wanted to select for a very short distance between leaves, है ना, जो आपने पत्ता गोभी देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि लीव्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो कुछ फार्मर्स को बहुत छोटा डिफरेंस चाहिए था, कुछ को बहुत ज्यादा चाहिए था। तो जो छोटे वाले थे उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग ब्रीड बना ली जो हम लोग खाते आते हैं। Some have wanted to select arrested flower development and have bred wrongly or for fertile flower and have made the cauliflower. ठीक है, some have selected for a swollen part and come up with a kohlrabi. ठीक है, some have simply looked for slightly larger leaves and come up with a large leaf vegetable called kale. Would we have thought that all these structures are descended from the same ancestor if we have not done in ourselves, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सब कुछ बना है ये सेम एंसेस्टर का प्रोडक्ट है ना। आप लोगों ने देखा, इवेंट्स की इमेज भी दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ तो नहीं गई ना अभी? हाँ ठीक है, ये देखिए, एक वाइल्ड कैबेज से कितनी स्पीशीज बन गई? 6 स्पीशीज को राइज हुआ। कोइराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, केल, है ना, रेड कैबेज जो आप लोग एज अ सैलेड यूज करते हो। तो ये सब कुछ बना एक स्पीशीज से सिर्फ, ठीक है। क्यों बना? क्योंकि रिक्वायरमेंट थी हर एक फार्मर को अपनी अपनी। Another way of tracing evolutionary relationship depend on the original idea that we started with.
The idea was that things in the DNA during the reproduction are the basic event in the evolution. If that is the case, then the comparing the DNA for different species should give us a direct estimate of how much the DNA has changed during the formation of these species. This method is now extensively used to define the evolutionary relationship or phylogenetic relationship. Molecular phylogeny, ठीक है, phylogeny is again a term for your evolution, ठीक है, evolution की study phylogeny भी कह सकते हो आप लोग. We have been discussing how change in the DNA during cell division would lead to change in the protein that we made in the new DNA. Another point that have been made in that these changes would accumulate from one generation to next. Could this be used to trace the change in the DNA backward in the time and find out where each change diverged from other? Yes, we can. Molecular psychology does exactly this, और the molecular phylogeny है वो यही काम करती है. This approach is based on the idea that organisms which are most distinctly related, मतलब बहुत ज़्यादा different है उनमें, will accumulate a greater number of differences in their DNA, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा distinctly different है, तो उनमें DNA में बहुत ज़्यादा difference होगा. Such study trace the evolutionary relationship and it has been highly rectifying to find the relationship among different organisms shown by molecular uh, phylogeny match the classification scheme that we learned in class 9. ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं है. Give an example of characteristic being used to determine how closer two species are in the evolution. तो आपने तीनों बताने, one is your homologous, analogous and is your spousal. ये सबके एग्जांपल दे दिया आप, ठीक है. Can the wings of a bird, a butterfly, and the wings of a bat be considered homologous? Why or why not? They are not considered homologous, they are analogous. No, because the function same but structure different. What are fossils? Fossils are the dead and decay remains of an organism. Why? What do they tell us about the process of evolution? They tell us about how old the organism is, ना कितना पुराना organism है. That tell us about the age of the organism, कितनी age किस type किस period में available रहा होगा वो. So all that is the function of your fossils. ठीक है. So that's all about today. In case you have any doubt, please reach out to us using the comment section, है ना, और एक डाउट फॉर्म भी अवेलेबल होता है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून. बस इसके बाद एक पार्ट होगा इस चैप्टर का, एंड आफ्टर दैट चैप्टर विल बी ओवर, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज योर आई एनवायरनमेंट, है ना, या फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 to 3 चैप्टर्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के 15 से पहले खत्म हो जाएगी. ठीक है. थैंक यू गाइस, गुड बाय.